A very good afternoon to one and all present over here. This is your biology mentor, your teacher on Infinity Learn, and I welcome you all to this series of Board Brahmastra. Hope you are having a lovely afternoon. And on this day after Sankranti, right, so let's have a full Josh in the session. What are we going to do today? We are going to talk about the chapter Our Environment. And when we talk about this chapter Our Environment, ये कैसा chapter है बच्चों? ये कैसा chapter है? ये ऐसा चैप्टर है जो आपके पॉकेट में फुल ऑन मार्क्स लाके देखता है. इफ यू चेक ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे कर ही रहे होंगे, है ना, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट तो ये सब हम कर ही रहे. तो इसमें से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, इफ यू आर एनालाइजिंग एंड स्टडीइंग स्ट्रैटेजिकली, तो आपको ये समझ में आता होगा ये साइंस का सबसे छोटा प्यारा न्यारा सा चैप्टर है. एट फुल ऑन 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, जो हमारी पॉकेट में फ्री फंड में आ जाता है. राइट, सो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर अप. नाउ इस पे कितना टाइम हमें देना चाहिए? आज जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करोगे, यहाँ से आपका 99% चैप्टर खत्म हो जाएगा. बाकी की पढ़ाई आप इसकी सीधा करोगे जब आपको साइंस पेपर की गैप मिलेगी, है ना. काफी लंबी चौड़ी गैप है, 4-5 दिनों की मस्त गैप आ रही है. सो देयर यू विल स्टडी द रेस्ट. सो मेरे बच्चे जुड़ गए मेरे साथ, हु ऑल आर देयर, just send a hi to me, right? So RK Craft textbook, hi Jack, hi Nusrat, hi Alicia, a very warm welcome to all of you over here, right? तो चलो शुरू करते हैं without a further ado, right? So mind map, yes, I come up in the starting, in the beginning of the chapter. एक बार अगर माइंड मैप हमारे दिमाग में आया जाए ना, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करते वक्त, तो इट बिकम्स बटरी सॉफ्ट, इट बिकम्स बटरी केक वॉक, राइट. सो नाउ यहाँ पे when we talk about our environment बेटा, right, so when we talk about this chapter, what all are there? So there are two parts of this chapter. हम इसे broadly दो chapter, दो parts में divide कर सकते. We can just divide it into two parts. And what are those parts? The parts are like, the ecosystem wala part, where we talk about what is the ecosystem, what it is made up of, whether it is biotic or abiotic components, what all are present over there, right? And what are the types of ecosystem? Terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, right? Artificial, natural. We talk about such kind of things in the first part, right? Then we also talk about what are food chains and food webs, कैसे यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, राइट. बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त. आज ध्यान दे के हम पढ़ लेंगे और फिर इसको बंद करके सीधा खोलेंगे एग्जाम के पहले, ठीक है. इतना डिटेल में हम इस चैप्टर को आज ही के आज खत्म कर देंगे, आज ही के आज इसका काम तमाम, राइट. सो देन नेक्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम है the waste that we create, right? So the waste that we create, we talk about waste management, solid waste management we talk, right? We talk about biodegradable, non biodegradable waste. So types of waste, what are there? क्या करना चाहिए, right? इसका solution क्या है? And then we also talk about the ozone, right? यहाँ से questions आते हैं. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि questions कहाँ से आते हैं on this chapter, right? What are the favorite topics of your CBSE people to ask question? So question आता है ozone layer से, right? Then questions आते हैं from the trophic level, जो हम पढ़ाई करते हैं ना, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर्स एंड द फूड चेन एंड द फूड वेब्स की, वहां से आते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फूड चेन, फूड वेब, वी आल्सो टॉक अबाउट द थिंग लाइक the trophic levels. So from that, so now here when we talk about the our environment, when we speak about our environment, environment क्या चीज है बेटा? What is environment according to you? Can you give me the answer for this in the chat box? What is an environment, right? अभी हम जो बात करें, क्या this is an environment? You, me, your phone का screen, right?
So this internet that is connecting us, yes, this all is our environment. है कि नहीं? Yes or not? This is our environment, right? So here biotic factors are you and me, and then the rest of the factors are abiotic. Yes, exactly. बहुत अच्छे आगे ग्राफ कि our surrounding, तो हमारे surrounding में जो भी चीजें आपको दिखाई दे, so that is your environment. Right? अब आप इस environment से as soon as you go out, what do you see? You see that there are organisms which are interacting with each other. Yeah, there are organisms which are interacting with each other. आप घूमते घूमते चले गए, you know, trek पे चले गए. You are into a very beautiful forest on a mountain. Then what do you see over there? You see animals, right? You see the soil, rocks, water, wind. ये सारी चीजें हैं वहाँ पे. So now the interaction is not happening only between the living organism, but it is also happening between the non-living and living organism, right? तो इकोसिस्टम उसे ही कहा जाता है. So what is an ecosystem? Ecosystem includes both biotic and abiotic factors. Now जैसे biotic factors abiotic के ऊपर dependent रहते हैं, वैसे ही biotic is also dependent on us. Now you will say, how ma'am? How is it possible? Is there anybody who can tell me how abiotic factors are dependent on us? Can you tell me that? Hi Piyushi, hi Aryan. Yes? Let me know the answer कि कैसे. You know कि biotics are dependent on abiotic. Definitely we are taking in oxygen. We are dependent. But how is that the abiotic components are also dependent on? यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि interdependency. What word we are using? Look at the keywords. इस chapter में keywords के ऊपर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है. So interdependency, we are saying inter, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. क्या हम थोड़ी सी बुद्धि लगा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को आप अपनी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? सो अब मानो कि आप टहलते टहलते निकल गए. मैंने कहा कि हम जा रहे हैं एक एक्सपीडिशन पे. यू हैव गॉन फॉर अ ट्रैक एंड यू encounter such a situation. एक छोटा सा pond है, right? You have seen, okay, there's a pond, there are certain kind of animals, plants, trees, water, right? The frog jumping here and there. So in this, if you are asked to categorize thing, then आप दोनों को अलग अलग categorize कर दोगे. कैसे? कि biotic component and abiotic component. Abiotic component, your air, wind, you know, soil, earth, temperature, all of this. So जो सारे पांच भूत होते हैं ना, अग्नि अस्त्र, सूर्य अस्त्र, वो सारे जो तुम्हारे वायु अस्त्र, जल अस्त्र, वही है ये सब, राइट? तो जल, वायु, धरती, इन सारे अस्त्रों की हम बात यहाँ पे करते हैं. एंड दे आर एक्चुअली द अबायोटिक कंपोनेंट, आर दे आर द अबायोटिक कंपोनेंट. ये चीजों को मजेदार तरीके से पढ़ना चाहिए, वरना इट बिकम्स वेरी बोरिंग. तो अब बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बायोटिक कंपोनेंट. तो ये दोनों ही चीजें मिला के मेरा क्वेश्चन अभी भी लाइव है, ठीक है? अभी भी मेरा क्वेश्चन वेट कर रहा है आपके आंसर्स का. कैसे? कि मैंने पूछा हाउ द अबायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक तो है ही है डिपेंडेंट, अबायोटिक फैक्टर्स कैसे डिपेंडेंट है? थोड़ी बुद्धि लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, राइट? लेट्स फाइंड आउट द आंसर. आई विल आंसर यू दिस, बट पहले मुझे कुछ तो आंसर आने दो, ठीक है? तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, देयर आर टू टाइप्स. क्वेश्चंस इस वजह से भी आते हैं, राइट? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में प्यारा सा एक आधा क्वेश्चन आ जाए, राइट? तो देन दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेबल टॉपिक कि नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या अंतर है. अब ये है एक समुंदर, राइट? यहाँ पे जाके हम ना मछली को दाना खिलाते हैं, ना इस समुंदर का पानी साफ करते हैं, उल्टा गंदा ही कर जाते हैं, राइट? सो देन अ रेन फॉरेस्ट जहाँ पे हम निकले हैं, देन ओह दैट्स अ बिग इंडोर गार्डन, ठीक है? अगेन एन एक्वेरियम. अब क्या आ रहा है? अब हमारे सामने आ रहा है, ओ ये खेती बाड़ी चल रही है. तो अब इससे हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? अब जैसे कि एक्वेरियम है, हाउ टू डिफरेंशिएट, एक छोटा सा टिप दे देती हूँ, बाकी आप तो समझदार हो ही हो, है ना? सो हाउ do you differentiate between natural ecosystem and artificial ecosystem?
क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हाउ विल यू आंसर दिस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, विच वन इज द नेचुरल, विच वन इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? वेरी सिंपल यार, जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। अब खेत में हम चले जाते हैं पानी देने, हम मतलब खेत जो खेती करता है, किसान जो मेहनती किसान होता है, वो पानी देने चले जाते हैं, राइट? खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब कुछ उसकी देखभाल करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम, बट व्हाट काइंड? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेन फॉरेस्ट और कोई भी जंगल को देखो यार, क्या हम जाके वहां पे पेड़ों को पानी डालते हैं? कभी किया है आपने? नहीं ना, आई होप ऐसा ना किया हो, राइट? तो पानी या फिर वहां पे कटाई छटाई कुछ जरूरत नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम ना कुछ करें तो ही बेहतर है, राइट? द मोर वी आर अवे फ्रॉम दिस प्लेसेस दे आर मोर हैप्पी, सो दे डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, इन शॉर्ट। ऑलराइट, सो नाउ दिस इकोसिस्टम हमने देख लिया कि कैसे नेचुरल इकोसिस्टम होती है and the artificial ecosystems are there. Let it be any ecosystem. In any ecosystem, natural or artificial, you will find three levels. What? Producers, consumers, and the decomposers. Right? So I have got an answer. The abiotic factor is an ecosystem. Yes, correct. Right. Man-made environment. बिल्कुल बिल्कुल, abiotic components act as a source of resource for biotic component. दमयंती बहुत खूब, लेकिन ये तो उसका आंसर हुआ ना कि बायोटिक डिपेंडेंट है। मुझे जानना है कि अबायोटिक कैसे डिपेंडेंट है, राइट? अबायोटिक कैसे डिपेंडेंट है? सो the quantity, Lasha, fantastic. So here I will explain you कैसे डिपेंडेंट है ना? कि अब you have given me the correct answer. Well, good job done guys, good job done, fantastic. I have got very brilliant students in my class. I am proud of this class now, right? So अब यहाँ पे producers होते हैं जो पेड़ पौधे रहेंगे हमारे, है ना, जो भी ग्रीन रहेंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया जो कह लो, ठीक है, वो सारे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देन आते हैं योर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो है, अब कंज्यूमर का लेवल कैसा है, कंज्यूमर क्या खाता है, राइट? उसके ऊपर अब कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहलाते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? लेट्स सी दैट, राइट? सो जब मैं कह रही हूँ कि खाना खाते हैं, ऑब्वियसली यू, मी, एवरीबडी, यस करेक्ट, राइट? सो सारे के सारे जो है दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बायोटिक चेन जो बनती है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप between biotic component. It is a linear series, right? It's a linear series. Food chain क्या है? अगर ये definition आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे keyword क्या है? Linear series. बायोटिक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक। अब जब हम फूड चेन को पढ़ाई करते हैं, फूड चेन जब हम स्टडी करते हैं, वी डोंट स्टडी कि यू नो इसमें पेड़ या फिर इसमें हवा, पानी, कोई भी हमारे जो जल, वायु, अग्नि, इन कोई भी अस्त्रों की बात हम यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे सीधा सीधा हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, राइट? सो इट्स अ सीरीज, राइट? सो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग, क्या है ये? एक सीरीज है, एक लीनियर सीरीज है ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन फॉर्म, राइट? फ्रॉम वन अनदर फॉर्म्स अ फूड चेन। तो संस्कृत में एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक भी है जिसे कहा जाता है जीवस्य जीवश्यम, राइट? एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भैया ये क्या है? यही तो हमारी फूड चेन है। वैसे अगर सोचा जाए तो इन नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में नेचुरली फूड चेन मौजूद नहीं होती है, राइट? वहां पे फूड वेब होगा। लेकिन फिर हम ये फूड चेन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम इसे क्यों पढ़ते हैं? तो इकोलॉजिस्ट जो है वो इसे पढ़ते हैं ताकि आपको ट्रॉपिक लेवल का ज्ञान मिले बालक, ठीक है? समझ में आया बेटा जी कि यहाँ पे हम ट्रॉपिक लेवल क्यों पढ़ते हैं, सॉरी फूड चेन क्यों पढ़ते हैं? फूड चेन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ट्रॉपिक लेवल को समझ सके। सो जो इकोलॉजिस्ट थे, राइट, सो दे डिसाइडेड अरे यार अगर हम फूड वेब को लेके बैठ जाए तो बवंडर हो जाए, राइट? तो यहाँ पे सब कुछ इतना बड़ा खिचड़ी है, कैसे समझे? इसे सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी ट्रांसफर एंड द ट्रॉपिक लेवल्स एंड फ्रॉम दैट perspective we study the food chain। नहीं तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं होता है,
राइट. सो व्हाट्स अ फूड चेन? फूड चेन, अ टिपिकल फूड चेन. बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी, राइट, कि फूड चेन क्या है, कि अब यहाँ पे इसको इतना एनर्जी है तो कितना मिलेगा. तो पहले हम समझ से उस पर भी जाएंगे, लेकिन कैसे, राइट. तो प्रोड्यूसर, एनी ग्रीन थिंग, एनी ऑटो, ग्रीन मतलब अब हल्क को मत बोल देना कि प्रोड्यूसर है, राइट. एनी ऑटोट्रॉपिक or any autotrophic organism, let it be your tree, right, let it be the cyanobacteria, जिसे हम ब्लू ग्रीन algae कहते हैं. कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, राइट. तो वो सारे के सारे लोग जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं. प्रोड्यूसर को जो खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर who are the primary consumer? Welcome Likit, Liaquat, no problem. Who are the primary consumers? All the herbivores. All the herbivores are the primary consumers. ये क्योंकि ये सिर्फ घास ही खाते हैं, राइट. ये सिर्फ घास ही खाते हैं, ये सिर्फ घास फूस ही खाते हैं. ये ग्रीन चीज है, मतलब डायरेक्ट प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला अगर कोई है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले को हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर. नाउ टर्शरी कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स विच आर क्वाइट tough, strong, yes, exactly, yes Ankit, right, they are strong. So those are the tertiary consumer. Now वो थी terrestrial ecosystem. ऐसा ही ecosystem आपको aquatic मतलब कि वाटर में भी दिखाई देगा. नाउ इन एग्जामिनेशन दे मे गिव यू अ डायग्राम, ठीक है, और वो बोलेंगे कि अच्छा इसको पहचानो, यहाँ पे कौन आना चाहिए, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है. तो हमें दोनों का ही ज्ञान होना जरूरी है, एक्वाटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल फूड चेन. तो एक्वाटिक फूड चेन भैया अब कोई भी रहने दो बेटा जी, कि अगर ये है ना टेरेस्ट्रियल है तभी, अगर ये राइट, अगर ये कोई भी यू नो एक्वाटिक इकोसिस्टम रहने दो, तो टेरेस्ट्रियल रहने दो, एक्वाटिक इकोसिस्टम रहने दो. शुरू तो इसने फूड चेन को प्रोड्यूसर ने ही करना है. किसने करना है? इट विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर. MCQ बनता है बेटा जी इसमें CBSE का, ठीक है. 2-4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन, सिलेक्ट द करेक्ट फूड चेन. सो जस्ट चेक वेदर द फूड चेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर, तब वो करेक्ट है, ठीक है. चेक वेदर इट्स कंटिन्यूड बाय प्राइमरी, देन द सेकेंडरी, देन द टर्शरी, देन द क्वाटरनरी, राइट. तो क्वाटरनरी तो यहाँ पे खैर एक्वाटिक में पॉसिबल है, बाकी जगह पे पॉसिबल नहीं है. तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे कौन है? फाइटोप्लैंक्टन. बायोलॉजी क्या है यार? लैंग्वेज है ना. फाइटो प्लांट जैसे प्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट्स, राइट. सो फाइटोप्लैंक्टन्स, तो छोटे प्लांट्स, यस, right. So phytoplanktons are the autotrophic small plants, teeny tiny microscopic plants in water, whereas zooplanktons animal like. यार zoo का मतलब ना कहीं पे भी आने दो, कहीं पे भी आने दो इस चीज को, राइट. इन बायोलॉजी zoo मतलब कि एनिमल, याद रहेगा ये, ठीक है. zoo मतलब कि एनिमल, फैंटास्टिक. तो फाइटोप्लैंक्टन को खाया जाएगा, जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को एक कोई छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को कोई बड़ा मछली खाएगा, बड़ा मछली को कोई बड़ा सा व्हेल खा लेगा, राइट. तो इस तरीके से हमारी एक्वाटिक इकोसिस्टम बनती है. अब हम बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स. अरे बिल्कुल सही जय, बिल्कुल सही, राइट. सो अब ट्रॉपिक लेवल के फंक्शंस कौन से हैं. अब ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए जिसके चांसेस बेहद कम है इस बार की बोर्ड एग्जामिनेशन में, बट या स्टिल वी शुड बी अवेयर कि इसको भी तोड़ मोड़ के पूछा जा सकता है. तो अब यहाँ पे प्रोड्यूसर का क्या काम, आप देख रहे हो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, राइट. ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम. पूरे विश्व के लिए ये खाना बनाते हैं. तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, राइट. इन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, राइट. ओके. सो यहाँ पे this producers will produce their own food, right, and they form the first trophic level. What is their function? They form the first trophic level.
Then there are primary consumers. You know already what are primary consumers. They are the herbivores, right? They eat directly on the producers. ये producers को खाते हैं directly. They feed on the producers. Now they include deer, rabbit, pigeon, parrot, grasshopper, right? Cricket, all your insects, right? Many herbivores, birds. Then that cute little bunny over there. Any example you can give over there. Secondary consumers are, wow, that one I loved it, right? Beautiful. Okay, so now the secondary consumers are basically the consumers. Yes, they will eat the primary consumers, right? They will eat the primary consumers. They eat the primary consumers, and that's why they are called as secondary consumers. ठीक है? So secondary consumers will form the third trophic level. All of that. Then tertiary consumers, the fourth trophic level, the topmost trophic level, सबसे बलवान trophic level would be the fourth one, right? Yes, Aryan, perfect, right? So they are the four trophic level. So here trophic level 1 become your producer, your primary consumer become trophic level 2, your secondary consumer become trophic level 3, and then finally the trophic level 4 is formed by the tertiary consumer. This we have to remember, right? ये आसान भी है, इतना कोई तोफ चीज है नहीं. Right? They are very easy to remember, but the question comes from here itself. इस वाले topic में the question comes from here itself. Now we'll talk about food web as we have discussed earlier. Food chain तो भाई ecologist ने अपने सहूलियत के लिए, that means for their own convenience, the ecologists have basically started studying the food chain so that they can design a trophic level and the further studies of an ecosystem can be done. लेकिन in an ideal situation, अब ये, you know, this rat would not say, oh no, I'm not going to eat the grasshopper. They are very, you know, hard to eat. We have to chew them a lot. Let me eat something very soft like a small frog or a tadpole. That would be my food. यार जंगल में जंगल राज होता है, there is no choice, है ना? अब यहाँ पे choice नहीं है कि नहीं नहीं मम्मा मैं ये नहीं खाऊंगा, अब तो जो है भाई उसे खाना पड़ेगा. So there is multiple option, and that's why beta ji, what is a food web then? Correct, a food web में organism को कई सारे option होते हैं. So many interlinked food chains make up the food web, right? Interconnecting food chain. तो ये actual वास्तविक स्थिति होती है. This is the actual thing which is present. Fantastic, fantastic. Ab we have seen the trophic levels. We have understood how did we design the trophic level. It came from the studies of food chain, right? And because of that, now we have decided there are 1, 2, 3, 4 levels of trophic, right? अब इस trophic level को अगर हम किसी graphical representation में बता दें, if we depict the level of tropics in a graphical representation, then that becomes your ecological pyramid. So what is an ecological pyramid? An ecological pyramid is a graphical representation of the food chain से बना हुआ trophic level. So it's a graphical representation of your trophic level. Correct? Right? ठीक है. So अब यहाँ पे क्या होगा? बस लगाना है इनको. So trophic level 1 producer, trophic level 2 primary consumer, trophic level 3 secondary consumer, trophic level 4 the tertiary consumer. Ab when we are studying the trophic level, why are we studying this? We are studying it so that we can understand what is the energy transfer, right? Energy flow, important topic. हम क्या कहते हैं इसे है? बेहद काम की बात, बेहद काम की बात, BKB, right? So now what is this? There you understand कि कैसे number of trophic level is involved for, you know, transferring of the energy to the next trophic level, right? And whenever this energy is getting transferred further, the trophic levels, yes, the energy will get down. Only English, सिर्फ English चाहिए. I'm doing it in English. Do not worry for those guys. I always repeat it in English. ठीक है?
Do not worry at all, Nimal. It is like 40% Hindi and rest is in English. Right? So, chalo. Understood? A question coming your way. A question coming your way. Ready to answer that? Okay. So, now, in the given figure, various trophic levels are shown in a pyramid. At which trophic level is the maximum energy available? As you guys know, okay, this is 10% law, Raymond limit. Yeah? Fantastic. Okay, I want more answers. Please, fatafat. So I've got the answer from Nimala and then Lasha. That's all. Jay, yeah, Aryan, that's all. Okay. More answers, please. So here, the given figure, various trophic levels are shown in the pyramid. At which trophic level maximum, highest energy would always will be with? Correct, Rohit, Aryan, bahut achhe, Ankit. So now you have to tell me who are at the trophic level 1? Who are present at the trophic level 1, beta ji? I don't want silence at all. No silence in the chat box. Aane do answers ko. Fatafat. Let me see who is answering them. Like that. Fantastic. Right? Who are they? They are the plants. They are the green plants. Green bacteria, cyanobacteria, blue-green algae, who can do autotrophic job, right? Who can do the photosynthesis. So plants come over there. Now, wo question jo hai, that was dependent on 10% law. So now I understand ki you have decent understanding of this topic, right? So now, how is the energy flowing? यहाँ पे नदी उल्टी बहती है, right? Now it is going from down to top. कैसे? सबसे पहला जो sun energy को harvest कर सकता है, the first one who can harvest the sun energy, the inorganic energy converted into organic one is done by the producers. Yeah? Who is doing that job? Producer, beta ji, right? So the producer eaten up by the herbivores, herbivores by carnivores, carnivores by top carnivores. इस तरीके से the energy is flowing from this direction, right? So sun's energy, only 1% can be harvested by the producer. So producer will have complete energy, the rest is getting lost. So only 10%, Raymond limit ने क्या बताया कि only 10% of it, fantastic Lasha, unidirectional flow होता है, down to top approach होता है, and now here energy pyramids are always upright pyramids. Energy ka pyramid is always upright pyramid. So why is this 10% getting just 10% is getting up, and what happens to the rest of the 90%? The rest of the 90% is either utilized by the organism or is lost in the form of heat. Yes, it's lost in the form of heat. So now that is why there is only transfer of 10% of energy. Now here is the topic from where numericals do appear in your examination. This topic से numerical question को expect करो. अगर इस chapter से कहीं से question आएगा पक्का तो इस topic से जरूर आएगा. कोई भी previous year question उठा लो, question paper, check the previous year question paper, you will find one question on this topic. Right, on this topic. So now let's see. The number of steps in a food chain can never be more than 6, 7, 4, 5. Coming your way, Aryan. Do not worry. Let's talk over this. So मैं question से भी तुमको पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है? Do not worry कि गलत होगा सही होगा. I am here to teach, right? So I am teaching you via the question because this is the time where aptly you can learn via the sample questions. Yeah. Okay. Fantastic. That's all. Ankit, Aryan, and Jay. That's all. What about the rest? Come on, I want more answers. More answers, guys.
लेट देम बी रॉन्ग, डू नॉट बी हेजिटेंट, कोई यहाँ पे जज करने के लिए नहीं है आपके पास, है ना. सो इसका सही आंसर क्या है बता दूं. द सही आंसर इज 4, टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल. Lovely, 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 right? So tertiary trophic level. अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ. अगर मैं इसके सामने लगा दूं y, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? If I ask why now, why there are only 4 trophic level, then what could be the answer? बताओ बताओ जल्दी बताओ. मैं समझती यार, खाना खाने के बाद तुम लोग बैठे हो, ठीक है. मैं भी यहाँ पे खाना खाने के बाद छुट्टी वाले दिन आके पढ़ा रही हूँ. तो आई वॉन्ट दैट एनर्जी, आई वॉन्ट दोज लाइक्स ऑन दी लाइक बटन, ठीक है. फैंटास्टिक, वेरी गुड दीक्षिता, जय, आर्यन, बिंदी, बहुत अच्छे. राइट. सो यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे ये होता है कि आफ्टर द 4 ट्रॉपिक लेवल 10% एनर्जी जा रहा है, 10% एनर्जी जा रहा है, 10% एनर्जी जा रहा है, 90% इज गेटिंग लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. तो जब तक टर्शियरी लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद हेक्सेनरी, क्वार्टरनरी, उसके बाद जो भी होगा, राइट, ऑक्टेनरी तक कोई भी एनर्जी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा. राइट. यस, करेक्ट. फैंटास्टिक, लवली, यू गाइज आर लवली, सो लवली. ठीक है. सो दैट इज वाई. चलो, आपने पूछा था कि एक न्यूमेरिकल दे दो, आ गया. ठीक है. सो इन फूड चेन, इफ 10,000 joules of energy is available to the producer, how much energy will be available to the secondary consumer to transfer it to the tertiary consumer? हाय हाय, ये क्या हो गया. राइट. सिंप्लीफाई करो दिमाग में. सिंप्लीफाई करो. वाव, ये सोनाली बहुत सही जवाब दिया बेटा आपने. ये क्या हो रहा है? 1000 जूल्स, 100 जूल्स, 10 जूल्स. क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से देखें. क्वेश्चन ने कहा है कि 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर के पास कितना है? 10,000 जूल्स बचा है. How much energy would be available to the secondary consumer? इसके बाद कौन आएगा? PC, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है. Then you will have your secondary consumer and then tertiary consumer. Right. So now यहाँ पे energy would be available to secondary consumer. हमें ढूंढना है secondary consumer में कितना, right, to transfer it to the tertiary consumer. तो हमें क्या ढूंढना है? इसे ढूंढना है. राइट. इसे ढूंढना है हमें. अब बताओ, अब बताओ. ब्रिदल जवाब दो ना, जवाब दो. नाराज क्यों रहेंगे यार बेटा, है ना. You have to read it very carefully. That is the key point of this questions. My bachas, I'll tell you, you 100% know the answers. बायोलॉजी में हम गड़बड़ कर देते हैं सेंटेंसेस को पढ़ने में, समझने में. राइट. राइट. नाउ इज इट कमिंग. यार सिंपल सी बात है, 10% लॉ है. राइट. 1000 जूल का होगा 100 जूल, 100 जूल का 10 जूल, 10 जूल का 1 जूल, तो कितना बचेगा? 1 जूल वुड बी द आंसर. यार बहुत ही सिंपल सी चीज है. राइट. दीक्षिता, देयर इज योर आंसर ऑन योर स्क्रीन. सब आपको पीडीएफ में मिलेगा. ठीक है. इसको ध्यान से देखना. आपके टेलीग्राम लिंक में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी की सारी पीडीएफ आ जाती है. इसलिए मैं आंसर्स भी इंक्लूड करती हूँ ताकि आपको पता चले सही क्या है, गलत क्या है. राइट. सिंपल है. 10% निकालते जाओ, बस 10% निकालते जाओ. बहुत ही आसान है. राइट. वेरी इजी. ठीक है. तो चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन. अब
नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोमैग्निफिकेशन. सो वी हैव स्टडीड कि ओके देयर आर food chains. Food chains में we are eating things. When the food chain is proceeding forward, we are not only getting energy, but जहाँ पे हम use करते हैं, right? When we use the pesticides, chemicals, और ये सारी चीज़ें, those things also get, consumed by the consumers, and they are also going forward. Right, fantastic, right? They are also going forward. So it's not just that we are taking the good things. That was in case of olden days, जब हमारे दादा परदादा उनके टाइम में ऑर्गेनिक खेती होती थी शायद, then they were getting. But today we have all of this kind of food. Now this is not only that you are using pesticides on the plants. The plants are eaten up by the animals. Now imagine a plant, right, full of pesticide that has been eaten up by certain kind of aquatic animal. You are a pure non-vegetarian, hardcore non-vegetarian. You eat only fish or you eat only chicken, right? So that is also going to get transferred to you indirectly. And when these things are coming, they are not just going to come to you in small amount, but they are going to get magnified, right? They are going to get magnified. इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, आप देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन वाला हम करेंगे कभी आखिरी महीना, सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे. अभी मेरा एम है टू मेक यू फैमिलराइज एंड टू सेट दिस टॉपिक्स इनसाइड योर हेड. सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स विच आर यूज्ड specifically if they are non-biodegradable, right? When they cannot be degraded, they get accumulated over the food chain, over the trophic level, and that's why they get biomagnified. So कैसे चीजें non-biodegradable, right? कैसे चीजें, the non-biodegradable nature of these chemicals are actually going to affect. So biomagnification की definition ये रही बेटा, ठीक है? So this increase in accumulation of harmful chemicals at each trophic level. What are the keywords? The keywords over here are accumulation of harmful chemicals at each trophic level. At each trophic level is known as biomagnification. इसको हम इस ecosystem से समझते हैं, right? So now here what happens is the bottom one, okay, the bottom one, the specific DDT, dichlorodiethyl chlorophyllic, इसको आपको फुल फॉर्म समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देंगे अभी हम. DDT एक बेहद ही कॉमन सा पेस्टिसाइड था, अब जो कि बैन हो चुका है, ठीक है? कई जैसे इन आवर कंट्री ऑल्सो नाउ इट इज बीन बैन. अब ये पेस्टिसाइड ऐसा खतरनाक पेस्टिसाइड है that it doesn't get degraded at all, not at all. Right? So when it is being used, imagine it's been used in a farmland. From the farmland, all the runoff will come and get deposited into a sink. Sink क्या होती है? Water body. Sink क्या होती है? हमेशा water body. ठीक है? So in a water body, it comes and gets accumulated over there. Now what happens? The small zooplanktons, cute छोटे छोटे जो zooplanktons है, वो इसे खाएंगे. उनके body में it will get accumulated. Now once it is getting accumulated, the zooplankton would be eaten up by the small insects, right? They would be eaten up by the small insects. Now zooplankton जो रहेंगे वो एक ही zooplankton खाएगा क्या? नहीं, it will eat at least thousands, right? At least 1,000. So in the bottom phytoplankton से ये इकोसिस्टम शुरू हुआ, फिर zooplankton में आया तो 0.014 parts per million ppm इतना उसमें था. When it has been eaten up by this one, right? So this second trophic level over here, you can see that 0.41 ppm. मतलब what has happened? It is going to eat at least thousands of the zooplankton, right? Thousands of a zooplankton, and that's why the increase of that particular chemical would be also high. Same story follows
follows, and this is how it can end up into a terrestrial ecosystem as well. So it's not compulsory, ये समझना बहुत ज़रूरी है. It's not compulsory if a pollutant is in a water body, it can also transfer into the terrestrial ecosystem ultimately. It cannot be confined only here. If it is starting from a terrestrial, it can end up into water body as well. It is linked by the food chain. So what is happening? If you see this red bars, it's increasing at each trophic level. Zoop! इतना बड़ा हो गया ये. Right? So this is how biomagnification can hurt. ठीक है? So that was still biomagnification. Now we are moving on to the second half of the chapter, that is waste and its management. It's very simple one. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप शायद तीसरी चौथी कक्षा से ये पढ़ते आ रहे हो, right? You're studying it since you were a kid. Now here, what is waste? Anything that you do not use is waste. If you do not use your brain, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बढ़कर और कुछ नहीं रहेगा, है ना? तो इसे इस्तेमाल करना है. So now anything which we do not use, okay, environment and that is produced by human activity is waste. Alright, so types of waste can be biodegradable and non-biodegradable. Now who does this job of degradation बच्चा? The degradation job is done by the decomposers. Decomposers कौन होते हैं? Decomposers are the saprotrophic animals. That means they can grow and eat up the dead and decaying things, right? So that is non-biodegradable. ऐसे waste जहाँ पे you cannot get rid of them. Plastic, polythenes, metals, all of this which do not go away, right? They cannot get degraded and they can harm our environment seriously, are non-biodegradable ones. Right? They are the non-biodegradable ones. From where do you think these pollutants are coming? Oh God, please, ये तो कक्षा एक की बात है. Vehicle, pollution, कोई भी unwanted thing which are harmful, elevated level can, harm our health. Those are called as that's called as pollution. And basically, sources of pollution can be vehicular, industrial, domestic. Yes, domestic pollution can also be there. Agriculture and the loud noise, right? So all of this can be the sources of pollution. Pollution से क्या होता है? हाई गर्मी. इस साल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि भैया पूछो मत. Everybody uses this sentence at least once every year in the summer season. किया है कि नहीं? या सुना है कि नहीं? Tell me. Yes or no? Correct or wrong? है ना? बोलेंगे अरे इतना गर्मी बढ़ गया. Why the earth is, right? Why this earth is becoming so hot? Basically ये हाई गर्मी का रीजन है the greenhouse gases. ठीक है, the greenhouse gases which creates the greenhouse effect. Greenhouse effect जो है वो अपने में ही खराब नहीं है. Greenhouse effect is a good thing. Greenhouse effect is a good thing. Agree with me or not? Agree with me or not? Greenhouse effect is a good thing or not? हाँ अभी ठंडी है, right अंकित. All yes, definitely बच्चा. ठीक है, greenhouse effect is a good or a bad thing? ये अच्छा चीज है, बुरा चीज है? Tell me. It's a good thing? It's a good thing. It's a good thing. What does it do basically? This is your earth and earth ka atmosphere. It entraps the sun energy and keeps you warm during the nights बच्चा. ठीक है, night में तो sun नहीं होता है. Otherwise our situation would be like the moons. In the days it is like too hot to handle, more than 100 degree, and in the night it is like minus 190 or minus 119 degrees Celsius, too cold to survive. ऐसा नहीं होता है. In night also we stay cozy because of this greenhouse effect. So definitely it is a good thing, right? Very good, you guys know that. Now here,
Who is doing this job? I told you, the atmospheric layer, the blanket. हम blanket में कैसे रहते हैं? Warm and cozy रहते हैं, right? Similar way, that's why we call these gases का blanket, right? Gases का blanket. ठीक है? So now these are the gases which are natural ones. कौन से? The water vapor, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, or ozone, right? And then there are certain artificial man-made CFCs, chlorofluorocarbon, which are artificial one, right? Which are artificial one. So because of this, now is what's going to happen? You know, we say it's going to get warmer, but we are going to get drained, right? We are going to get sinked maybe because of this hot temperature, right? So this could be the tsunamis or the water as the Arctic, Antarctic, their water is stored or, you know, confined in solid forms. जैसे गर्मी बढ़ेगा, the heat will increase, the ice will start melting and floods would happen. That's just a prediction. Polar ice caps की वजह से. ठीक है? Let's hope that this does not happen. Right? This does not happen. Yes. So what is global warming? Due to the accumulation of greenhouse gases. Now हम क्या कर रहे हैं? एक के ऊपर एक रजाई ओढ़े जा रहे हैं. तो क्या होगा अंदर? What would happen? Greenhouse and global warming the same? No, Bimla. Greenhouse gases are good. But when we add to this greenhouse gases, when the concentration of greenhouse gases are increasing, then that causes global warming. So the increase in temperature, right? So due to accumulation of greenhouse gases, right? Due to constant nonsense human activity like ऐसा मत लिख देना पेपर में नॉनसेंस वंसेस, ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, right, and the gradual increase in the earth temperature, that is global warming, right? So global warming is like you are odifying 1, 2, 3 blankets. Atmospheric blanket ही तो है, right, which keeps you warm and cozy. One है तो you will feel nice, but if you are, you know, loaded up with so many blankets, what would happen? अंदर तो गर्म होना ही है. Same thing is happening with us, right? Right. So इतना रोते हैं यार, इतना रोते हैं. Let me tell you, this was first spotted in 1980s, ठीक है? तब क्या हुआ? 1987 में people become vigilant all over the globe and they started to make some protocols, they started taking actions, and today we are actually close to patching up, right? Patching up. Ma'am, thoda side. Okay, sure. Right? So they are patching up this globe. So my question to you guys, is there really a hole in the ozone layer? क्या सच में? We talk about ozone hole. Is there really a ozone hole in the ozone layer? क्या ओजोन लेयर में सच में एक होल है? राइट, लेट्स थिंक अराउंड इट. नाउ बिटवीन यू थिंक अराउंड इट. यस अंकित, यस, प्लीज स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, राइट? यू विल गेट द एंटायर नोट बेटा, ठीक है? ओके, सो नाउ हियर what are we doing? We are talking about ozone layer depletion. How is this depletion happening? Important topic, right? Very important topic to, you know, for the examination. Questions do arise from here. Now what is happening? There is already an ozone layer which is protecting us from what? From the harmful UV rays. So there are actually 3 types of rays. UVA, B and C. So it completely absorbs B and C, right? Thoda bahut B and completely C, because of which what happened? The UV rays can cause skin cancer. What are the side effects? What are the effects of UV rays is a question that can be asked. So it can be like, you know, it causes skin cancer. Have you heard about the motiabindu, cataracts, right? They are also caused by this thing only, right? Correct, Jay. Hey, Alan, I'm glad you love it, right?
Hi beta, hi. So those things are very harmful. The UV rays are very harmful for the organisms on the globe, and the ozone layer is actually protecting us. How does it protect us? It absorbs the UV light. Now what is done by us कि यहाँ पे depletion हो रहा है? The thing that is happening is this O3 oxygen के three molecules of oxygen together forms the ozone, right? So whenever there are this kind of harmful chemicals, CFC, which is found in the refrigerator ACs and some aerosols, the sprays, now in refrigerator ACs it is banned completely, right? So such things, that's why the ozone layer is patching up, by the way, okay? So ये क्या करता है? ये ऊपर जाता है. Now the chlorine molecule will react with the oxygen from the O3 and it will leave the chlorine oxide and ozone को तोड़ देगा basically, right? That's why it will become thinner and the UV rays can come in and can get harmed and it can harm us, right? So that is the process. Now as I have asked you and I guess I have got one answer, telling कि नहीं, ozone layer does not have a hole. In fact, ozone layer depletion मतलब it is basically getting lighter. It is becoming less dense over that particular region. Why? CFC जैसे harmful chemicals की वजह से. Now another thing which you have to remember, I have told you 1987 people become vigilant, right? All over the globe, everybody were, and India was also a part of, you know, signing those protocols, and that was done by United Nations of Environmental Program, UNEP. Important to remember, UNEP, right? So UNEP actually initiated this, right? UNEP initiated this, and यहाँ पे it was made mandatory that the industries to make CFCs, free refrigerations and exhausters, it would be banned, right? Now वहाँ पे ban है, and there is basically control over the release of this thing, because of which the ozone is patching. If you go and check you know, on the internet, you'll see that the ozone layer is actually healing up now. This ozone layers का जो depletion है, it is very much on the Antarctic. Previous year question है ये, right? Previous year का ही question है, आपके senior वाले batch का question है कि Antarctic में क्यों है? Because here all this harmful chemical goes and makes the you know, cloud over there, and those cloud in the colder condition affect more to the ozone molecules. That's why that situation happened. So where is your ozone layer present? Your ozone layer is present in the stratosphere. ये कहाँ पे मौजूद है? Stratosphere में. This is again a question to be asked. Where is the ozone layer present? Right? So it is present in the stratosphere. Fantastic, right? So how is this ozone layer produced and depleted? Basically production is also because of the UV light itself. So when the UV light strikes, right, the UV light strikes the oxygen molecule, the O2 get degraded into two nascent oxygens, and then this nascent oxygen mixes up with one oxygen molecule and we get our O3. So this reaction is important to write if asked about depletion and making of ozone, right? Fantastic. So gases causing ozone layer depletion, one more time: methane, water vapor, chlorofluorocarbon, nitrogen oxide, carbon dioxide. All of these are the things which harm. What should not be done? You all know what should not be done. ये आप ऐसे भी लिख सकते हो. So minimizing the car vehicular use, right? Maintaining the air conditioner, avoiding consumption or, you know, burning of unwanted stuff, and reducing burning. So combustion, consumption of gases, ये सारी चीजें हमें ध्यान देना चाहिए, right? Right? Fantastic. A question coming your way. A question coming your way. There's a graph. Given graph shows the time taken by different types of material. Which of the following substances could be an
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है बताओ जरा. You have a graph. On the graph, I hope it's visible to you very clearly कि this is Z, ठीक है, X and Y. And it is amount of substance versus number of days का graph दिया गया है. So am I getting my answers or am I getting my answers? Non-biodegradable कौन सा है? Fantastic! I want more answers. Yes, Ellen, I'll come to that point. No worries, beta. Fantastic. So it is Z. Why Z? Why Z? So option number C is correct. Because it is not degrading, right? It is not degrading. It is staying constantly over the period of time as well. That is why it is Z. Fantastic. How is oxygen different from ozone? Ozone has 3 molecules of oxygen which changes the angle of it, right? अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी उसकी angles and bonds समझने पड़ेंगे जो कि हम chemistry में पढ़ते हैं. In regular batches we will definitely look into it. ठीक है, अभी मेरा aim है आपको फटाफट जो चीज़ें आए एग्जाम में वो सिखाने का. So you know, expect such kind of questions in your examination जहाँ पे graphical questions रहेंगे. दूसरा question आता है कहाँ से? दूसरा question आता है हमारे numerical questions from the food chain, food web वाला, tropic level वाला, right? कैसे कैसे आगे जाएगा वो वाला. All right guys, आज हमने इस पूरे चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है. Now you can just practice the questions over this. ठीक है, आपको questions भी मिल जाते हैं, मैं आपके लिए questions भी भेजती हूँ. हम सारे ही teachers आपके लिए questions भेजते हैं. You know where to find them, right? In the Telegram channel. ठीक है, तो वहाँ पे आपको questions का PDF भी मिल जाता है, notes का PDF भी मिल जाता है. Practice them and you are good to go. बिल्कुल एग्जाम के गैप में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बस काफ़ी है. ठीक है, on that note, this is Deveeka taking your leave. Thank you, tata, bye bye, love you all.